वाह मेरे ड्राइड हाथों। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं ये कुछ अपनी डेली रूटीन और डेली हैबिट्स ऐसे वाली शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको ईज़ी बना सकते हैं। आज का व्लॉग ना सिर्फ जो है वो हम जैसी हाउसवाइफ्स के लिए बल्कि उन बच्चियों के लिए भी है जो कि अभी अनमैरिड हैं और पढ़ रही हैं, और जो मैरिड हैं उनके लिए भी अपनी डेली की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हस्बैंड ने आज फुजेरा कुरफकान जाना था अपने काम के सिलसिले में। तो वो यहाँ से वो यूएई की एक स्टेट है फुजेरा, और काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो फिर मैंने उनको भी नाश्ता दिया। पर आप सबके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूं, लेकिन जो भी मैं अपनी डेली के रूटीन जैसे भी मैं करती हूं, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूं। शायद इससे भी किसी को कोई फ़ायदा हो जाए देखकर, और इस वीडियो को देखकर आपको मोटिवेशन मिले। पर अपनी डेली की रूटीन शेयर करने से पहले मेरा ये ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट है चीज़ के साथ, साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड है। तो आज मैं इसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे ये जिंजर गार्लिक चॉप करना था, और साथ ही ये हस्बैंड के लिए मैं आलू चिकन शोरबे वाला बना रही हूँ। और ये बहुत ही मज़े का बनता है और बच्चे भी कई दफ़ा शौक़ से खा लेते हैं यही, ख़ास तौर पर पराठों के साथ तो ये बहुत मज़े का लगता है। और आगे अब इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 बेस्ट डेली क्लीनिंग हैबिट्स शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ हम जहाँ से उठाते हैं वहीं पर हम वापस रखें। जब हर चीज़ को उसकी जगह पर वापस रखेंगे तो किचन जो है बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लगेगा आपको। Number 1 is sweep the floor daily. Sweeping the house every day removes dust, hair and other debris from the floor. This is especially important if you have pets at home. Number 2 is make your bed in the morning. As soon as you wake up, the first thing you should do is make your bed. This habit sets a positive tone for the day and keeps your room tidy. When you follow these routines and tasks, your kids will be inspired themselves and follow as well. Number 3 is clean the bathroom daily. Cleaning the bathroom floor, sink and toilet every day is essential for preventing germs and maintaining hygiene. और ये लिक्विड हैंड वॉश का बड़ा गैलन ही एक ही दफ़ा ले आते हैं, और तीनों वॉशरूम्स में बॉटल्स जो है वो इनके साथ रीफ़िल कर लेते हैं। और जब किचन में आप कुकिंग कर रहे हो तो साथ साथ दूसरे काम भी करते रहना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहना पड़े। और वैसे भी आपको पता है गर्मी बहुत शदीद है, तो किचन में फिर बहुत ज़्यादा देर रहने की वजह से भी तबीयत कई दफ़ा जो है वो डाउन हो जाती है। तो फिर मैं ये सारे काम जो है ना वो क्लीनिंग के भी, किचन के, वो साथ साथ करती जाती हूँ। और आपको ये भी साथ बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में और एडिट करने में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा,
जिसकी वजह से ये मोबाइल भी जो है वो ख़राब हो गया और 2 दिन जो है मैं वीडियो भी फिर अपलोड नहीं कर सकी। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। Number 4 is wash dishes immediately. Washing dishes right after eating not only keeps the kitchen clean but also prevents bad smells and pests. And number 5 is take out the trash on time. Taking out the trash daily prevents odors and keeps insects and pests away. And kitchen trash especially should be taken out every day. And number 6 is put everything back in its place. Return items to their proper place after use. This habit reduces clutter and helps maintain order. Number 7 is fold or wash clothes daily. Putting used clothes in the laundry basket or washing a small load daily prevents clothes from piling up. Number 8 is clean windows and doors daily. Dust easily collects on windows and doors. Wipe them daily with a cloth to keep your home looking fresh. And number 9 is use air fresheners or natural scents daily. After cleaning, using an air freshener or natural scent makes your home feel more pleasant and welcoming. And last but not least, number 10 is making a daily cleaning schedule. Create a checklist or timetable for which part of the house to clean each day. This saves time and helps you stay organized.
पास एक आइडिया था एक Wow, very tasty. So yummy. माशाल्लाह।